See here, today we are going to discuss about the corrosion. Actually, we have seen sometimes you will see there are a reddish color iron when kept in moisture. What happen? A reddish color, and sometimes it is eaten up or damaging of iron. कभी आप लोगों ने कार वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है, ऐसे लोहे वगैरह के जो है स्मॉल कील वगैरह आयरन थिंग्स में you can see that after some times there is damaging brown colors precipitation takes place and they will break damaging of metals due to oxidation, presence of air, presence of water, presence of moisture, presence of chemicals present in atmosphere, eaten up or damaging of metals due to oxygen and moisture and some chemicals present in atmosphere. So this is the called corrosion. Actually क्या होता है बेटा, ठीक है, the phenomenon in which damage or eating of metal due to oxidation of metals by various component of atmosphere. For example, components may be oxygen, may be water, is called corrosion. Okay, we will see some experiment I will show. Okay, by the help of experiment you can see when corrosion will take place. We have taken 4 test tubes A, B, C and D, and 4 iron nails I have taken. They are kept first test tube. See here A. The A iron nail is kept inside boiled water and one oil layer. I have taken one oil layer here. In second I have taken a salt water. Third I have taken only air. And in fourth I have taken air with calcium chloride. After some days, what happened? If you'll see, after some days, in first the iron nail will be same. There is no rusting, there is no corrosion. I have seen in salt water it is corroded, rusting is taking place very rapidly. In C we have seen a small rusting takes place, and in D we have seen there no rusting takes place. We can see here the C where only air is there, we have seen there a small rusting takes place, and in salt water we have seen rusting takes place more. Reddish color, you can say iron oxide will form. In A, where we have taken air, water with oil, boiled water I have taken in A, no rusting takes place, and calcium carbonate, calcium I have taken there. What happened? There is no rusting. So you can see the A and D, those test tube, no rusting, no corrosion, and B and C, if you'll see for the salt water, more rapidly corrosion will be there, and only air there will be a small rusting. Actually, what happened? So see here, for rusting, for corrosion, air and water both are necessary required. In first what we have seen, water is there but air is not, because boiled water I have taken, oxygen is not, sorry, oil layer I have taken here, that's why oxygen is not present there. That's why in test tube A we have seen there is no rusting, no corrosion takes place. In salt water we have seen, if salt we have added in water, here oxygen and water both are present, here rusting takes place more rapidly, more corrosion takes place.
In C, you can see only air I have taken, but slight moisture is present always in air. So due to that moisture, we can get, our Neil can get H2O and air, oxygen there will be. So here a small rusting takes place in test tube C. In D, air is there, but we have closed here calcium carbonate. So that calcium carbonate will absorb the water. If calcium chloride will absorb the water, due to what, here oxygen is present, but water is not present, moisture is not present. Due to that, what happen here in D, we will see there is no corrosion, no rusting takes place. In all four experiment, what we have seen, oxygen and water both are necessary for rusting of iron. First thing. Second thing, if we will added the salty water, what happen, the rusting will takes place more rapidly. Okay, and in air there is also moisture present. That's why here what happen in test tube C, we can see rusting takes place. If you have taken dry air, suppose dry air, there is no moisture, so you can see there will be no rusting takes place. Our corrosion is very very slow process, or you can say sometimes they are negligible. Here, what is rusting? Iron articles are shiny when new, but after some days, a certain type of reddish colored solid layer collects on their metallic surface. This layer is called rust, and this process is called rusting. See here, when iron we have kept some days, taken moisture, what happen, a brown color, reddish color powder will be there. So that powder is actually iron oxide. So that iron oxide is called rust, and this process is called rusting. So we can see here chemical formula is what, Fe2O3. Actually that is ferric oxide, and there are some moisture. So there may be any number of molecules of water. So this is the chemical formula of rust. Actually, what happened there? How iron will be oxidized? What will be the chemical process? So see here, suppose iron is there. Firstly, iron converted at the anode. They are converted at they are emitting electron, they are converted at ferrous ion on anode, and oxygen, what happened, oxygen reacted with water, hydrogen molecules, hydrogen ion of water, and they are absorbing electrons, and they will form water. You can say 4H plus O2, 2H2O. And this water, this iron, ferrous iron, that is not ferric. So this ferrous iron, again they are oxidized, they will form ferric ion, and this ferric ion of solution, this ferric ion of aqueous solution, they will react with water, and they will form ferric oxide, Fe2O3 and H2O. So this ferric oxide, actually this is the rust. Rust and some hydrogen ion also they are outing. So see here, if you are balancing, here 2 will be there. There is 4, 3 plus 1, 4. So this will be the balanced equation. This ferric ion will converted in a reddish color or bronze color of dust. This is iron oxide. This is called rust.
we can see here the rusting. This is reddish color, and this you can see this reddish color of iron oxide forming on the car due to moisture when after some time, okay, when it are kept in the moist air. We can see some practical examples. If I have quoted here zinc, negative charge in iron inhibits the dissolution of Fe plus. Here they have absorbed the electrons. If they are we will free from the atmosphere, what we have seen, you have not quoted properly, we have seen their eating of iron takes place. One more experiment we can see. If iron nail I have taken water, slightly rusting is there. One practical examples I have done, iron I have kept with silver strip. Here silver strip I have taken, very rusty. Here I have taken zinc strip. What we have seen, no rusting takes place. And copper strip I have taken, very rusty, we have seen in the practical experiment. So by these experiment we will give some conclusion कि when rusting will increase, when rusting will decrease, we will give some conclusions, some notes to you. See here by the experiment what I have shown you, what are the conclusion. First is both oxygen and water is necessary for rusting. Remember, both oxygen and water is necessary for rusting. क्योंकि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, कैल्शियम क्लोराइड वी हैव टेकन इन वाटर, ठीक है. व्हाट हैपन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, नो रस्टिंग विल टेक्स प्लेस. मैंने आपको एक दूसरा भी एग्जांपल लिया था, ऑयल एंड वाटर वी हैव यूज्ड, वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था तो वहाँ पर भी रस्टिंग टेक्स है. तो बोथ एयर एंड वाटर बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग. सेकेंड थिंग, सॉल्ट वाटर एक्सेलरेट रस्टिंग. If you have taken normal water, you have taken salty water. So salt water rust more, or acceleration due to salt water rusting will increases. Accelerate, salt water क्या करता है बेटा, accelerate करता है. इसीलिए आप देखो कि अगर suppose करो in Mumbai, if you'll see, तो nearby the Mumbai surface rusting will take place more. अगर वहाँ पर कोई nearby अगर आप क्या करो, मुंबई के जो सी साइड है, अगर तुमने वहाँ पर कार काफ़ी दिन छोड़ दी, अपनी गाड़ियाँ वगैरह छोड़ दी, तो वो यू विल सी दैट मोर रस्टिंग विल टेक प्लेस. अच्छा, वन थिंग मोर, इम्प्योर आयरन मस्ट रस्ट मोर क्विकली देन प्योर आयरन. अगर इम्प्योर आयरन लिया है, मिक्सिंग ऑफ आयरन लिया है, तो वो रस्ट ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू किसके, प्योर आयरन. आयरन रस्ट क्विकली व्हेन इन कॉन्टेक्ट विद लेस एक्टिव मेटल्स. अभी मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिखाया कि अगर हम आयरन को क्या करेंगे, लेस एक्टिव मेटल किसके साथ बेटा, कॉपर के साथ रख देंगे, तो आयरन की रस्टिंग जो होगी वो क्या होगा, मोर क्विकली. एंड आयरन मस्ट मोर क्विकली इन एसिडिक कंडीशन. एक चीज और भी ध्यान में रखो, इफ एसिडिक कंडीशन इज देयर, जैसे सपोज करो नाइट्रिक एसिड है, उसके पास में अगर आपका आयरन है, तो देयर विल बी रस्टिंग विल बी मोर क्विकली कंपेरिजन टू व्हाट यू हैव टेकन बेसिक कंडीशन. अगर आपने बेसिक कंडीशन लिया है या न्यूट्रल कंडीशन लिया है, तो उसके कंपेरिजन में इफ एसिडिक कंडीशन इज देयर, रस्टिंग विल बी क्विकली, और यू कैन से दैट दे विल एक्सेलरेट. अच्छा, एक चीज और भी ध्यान है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ कोरोजन. कोरोजन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो यू कैन सी कोरोजन कॉजेज द डैमेज टू व्हीकल बॉडीज, car, bus, scooter, whatever will be, bridges, iron railings, ship, and all objects made up of metal. Metals के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज होंगे, एंड देयर इज कोरोजन टेक्स प्लेस एंड डैमेजिंग ऑफ द car or damaging of the buses or damaging of the bridges will take place. And one more thing, corrosion is wasteful process due to which metal wastage.
मेटल्स की लाइफ जो है वो स्मॉल हो जाती है ड्यू टू किसके कारण बेटा, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन के कारण हमें क्या करना पड़ता है, बोलो, उनकी जो स्ट्रेंथ है दे आल्सो बिकम्स वीक। अच्छा, वन थिंग मोर, हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम द कोरोजन, हम कोरोजन से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो सी हियर, फर्स्ट मेथड इज बाय गैल्वेनाइजिंग। Galvanizing mean we can coat the metal with zinc, coating of zinc metal on iron surface. अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया बेटा कि when iron nail we have taken with zinc, iron is not corroding. That mean zinc is a corrosion resistance metal. So if we are coating, if we make a coating of zinc metal on iron surface, this method is called galvanizing. So by galvanization method we can prevent the corroding. One more example is there, to prevention by electroplating. ये बहुत important है बेटा, by electroplating. In electrolysis process we are making a layer of corrosion resistance metal on iron, that is called, क्या कहलाता है बेटा, electroplating. ठीक है, तो coating the metal with corrosion resistance metals such as chromium, platinum, gold, अगर हम इनका क्या करते हैं बेटा, एक लेयर चढ़ाते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन. See, last topic is rancidity. What is rancidity? The process of slow oxidation of fat and oil present in food materials resulting in the change of smell and taste in them is called rancidity. बच्चों, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर जैसे आप सुबह फूड बना लो, ठीक है, अगले दिन आप देखोगे या इवनिंग में आप देखोगे, ठीक है, समर डेज में आप देखोगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, उसमें से महक आने लगती है. ठीक है, आप कह सकते हो हारमोनियस भी, मतलब कैसा, यानी आप कह सकते हो कि डेंजरस हो जाता है. ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो ये जो आपका क्या होता है बेटा, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट आयल्स ए smell comes from the foods and their taste will change, that is called rancidity. ठीक है. अच्छा, कभी कभी हम इन रेंसिडिटी को प्रिवेंशन करने के लिए भी काम करते हैं. क्या क्या हम कर सकते हैं? फर्स्ट, कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर. इफ यू हैव kept the food materials in air tight container, if oxygen will be not there, what happen, that we can prevent the rancidity, or by destroying the taste and coming the smell of food. See, रेफ्रिजरेशन. कभी कभी आप लोग देखते हो घर में क्या करते हैं, जो हम फूड कुक करते हैं वी आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर. ठीक है, हम कभी मिल्क वगैरह ले आते हैं तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो 3 days 4 days वी कैन केप देयर. ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द स्मेल एंड टेस्ट. तो रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, आल्सो बाय दिस मेथड वी कैन प्रिवेंट द rancidity. वन इज पैकिंग ऑफ फूड लाइक पोटैटो वेफर्स. अगर आप पोटैटो वेफर्स वगैरह लाते हैं मार्केट से, तो आप देखोगे क्या करते हैं, वहाँ पर हम एयर को निकाल करके नाइट्रोजन हम फिल अप कर देते हैं. ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, पोटैटो वेफर्स इन पैकेट कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस. जैसे हमने अगर नाइट्रोजन गैस उसमें एंट्री कर दी तो ऑक्सीजन इफ विल नॉट देयर, तो देयर विल बी प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी. वन मोर थिंग, अवॉइड कीपिंग फूड इन डायरेक्ट सनलाइट. कभी कभी अगर हम सनलाइट पे डायरेक्टली इफ यू आर कीपिंग द फूड, रेंसिडिटी टेक्स प्लेस. तो उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम सनलाइट में न रख करके उसको हम कूल प्लेस पर और सनलाइट से थोड़ा सा दूर रखें, तो वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी. वन मोर थिंग इज देयर, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. कभी कभी हम क्या करते हैं बेटा, काफ़ी दिनों तक, 2 महीने 1 महीने तक भी हम फूड्स को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं. हाउ? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? BHA, butylated hydroxy anisole, or BHT, butylated hydroxy toluene.
एंटीऑक्सीडेंट का अगर हम ऐड कर देते हैं फूड में, तो उससे भी क्या हो सकता है बेटा, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, हम रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं।